Welcome everyone present here. Today we are going to discuss a very important chapter of the economics, and the name of the chapter is Globalization and Indian Economy. Prior to starting this chapter, first of all, we should have a clear-cut meaning of the term globalization and what does we mean by the Indian economy. ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है और इंडियन इकोनॉमी का मतलब क्या है, पहले इसको हम अच्छी तरह से समझ लेंगे, देन वी कैन अंडरस्टैंड द होल चैप्टर इजीली. Globalization is the term which utilize integration of something, whether it is concerned with society, whether it is concerned with politics, whether it is concerned with economics, whether it is concerned with culture, anything which is going to be connected with the different countries at the world level, then we say that this thing or this matter is going to be globalized. वैश्विक स्तर पर ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? वैश्विक स्तर पर कोई चीज जो पूरे विश्व के देशों में धीरे धीरे व्याप्त हो जाए. एंड हियर इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. भारतीय अर्थव्यवस्था का किस तरह से विश्व के अन्य देशों के साथ जुड़ाव हुआ और उस जुड़ाव की प्रक्रिया में फिर क्या क्या उसके परिणाम हुए, यही इस चैप्टर में पढ़ना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी वो विश्व की अर्थव्यवस्था से किस प्रकार जुड़ी, और जुड़ी तो क्यों जुड़ी, और फिर जुड़ गई तो फिर उससे क्या क्या परिणाम हुए. ऑल दिस थिंग्स वी हैव टू डिस्कस हियर. इन द ब्रॉडर सेंस, ग्लोबलाइजेशन टर्म इज हैव अ वेरी ब्रॉड मीनिंग. इसका बहुत बड़ा अर्थ होता है. एंड आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट एनीथिंग विच इज प्रिवेलिंग इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, देन वी से दैट द थिंग और द मैटर और द system is being globalized. Here what is going to be told about the globalization term in broader sense, here we see it is the process of rapid integration or interconnection between countries, culturally, politically, socially and economically. जब किसी भी देश के बीच त्वरित रूप से जुड़ाव होता है विश्व स्तर पर, कल्चरली रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सोशली मतलब सामाजिक रूप से या इकोनॉमिकली रूप से, उस प्रक्रिया को हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं. ये एक प्रक्रिया है. ग्लोबलाइजेशन क्या है? एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है. किस चीज़ का प्रोसेस है? रैपिड इंटीग्रेशन, मतलब त्वरित जुड़ने का. चाहे आप सोशली जुड़िए, चाहे कल्चरली जुड़िए, चाहे इकोनॉमिकली जुड़िए, चाहे पॉलिटिकली जुड़िए. अब मान लीजिए एक एग्जांपल हम लेते हैं. मान लीजिए कि आपके स्कूल लेवल में, क्लास लेवल पर कोई टीचर कोई एक्टिविटी कराते हैं, तो उसमें केवल क्लास के बच्चे जुड़ेंगे, तो वो आपका क्लास लेवल एक्टिविटी हो गया. अगर स्कूल लेवल पर होता है तो पूरे स्कूल के बच्चे उससे जुड़ जाएंगे, तो कहेंगे कि ये मतलब स्कूल लेवल का एक्टिविटी है. अगर उसी एक्टिविटी को हम दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ जोड़ दें तो फिर वो हो जाएगा कि मतलब ये आपका इंटर स्कूल कंपटीशन हो गया. और पूरे इंडिया के स्कूल से जुड़ जाए तो कहेंगे कि ये पूरे देश स्तर पर व्याप्त हो गया. अगर वो इंडिया से निकलकर वर्ल्ड लेवल पर व्याप्त होने लगे धीरे धीरे तो कहेंगे इसका ग्लोबलाइजेशन हो रहा है. तो ग्लोबलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, आइदर इट मे बी सोशली और कल्चरली और politically or economically. But here the word globalization, we will study this term in context of integration of the Indian economy with the world economy. And here what does it mean? It is the process of rapid integration or interconnection of investment, production, distribution, employment and trade among countries of the world. So first of all we should have the meaning, clear cut meaning of economy. कि इकोनॉमी क्या होती है, अर्थव्यवस्था कैसी होती है. अगर अर्थव्यवस्था के बारे में हम अच्छी तरह से जानेंगे तब ना समझेंगे कि अर्थव्यवस्था का ग्लोबलाइजेशन किस तरह से हो रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ जुड़ती हैं. तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जो होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेड अमॉन्ग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड.
In this chapter, we will look at globalization in limited sense. It defines globalization as means of integration of the economy of a country with the economies of other countries through foreign trade and foreign investment by multinational corporations. So, in this chapter, we will study the term globalization in the context of integration of the economy of a country with the economy of other countries by help of foreign trade and foreign investment by help of multinational corporations, multinational companies. We already know economy is a system within a country or a society where प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन इज मेड अलॉन्ग विद द फ्लो ऑफ मनी. अर्थव्यवस्था क्या होती है? अर्थव्यवस्था में अर्थ की व्यवस्था होती है, धन की व्यवस्था होती है. मतलब एवरी एक्टिविटी इन इकोनॉमी इज डन इन ऑर्डर टू गेन मनी, टू हैव प्रॉफिट, एंड इट इज ओनली इन थ्रू ऑफ द करेंसी मनी. So production is made all in primary, secondary and tertiary sector. After the production, it is distributed among the people of all over the country. Distribution is also necessary in economy, because if distribution will be not made, then how is it possible that any company which is making production in Jammu and Kashmir, it is not going to be available to the people of living in Bihar? So production is being made in the primary sector, agriculture sector, fishing sector, animal husbandry sector. Production is being made in factories, all the secondary sector factories. Production is made in the tertiary sector, all the services, and then it is distributed among the people, and then people consume it. If people will not consume it, how is it going to be the next productions would be made? Suppose the agriculture production is made and people don't consume it, then what will the use of making production another next year? So whatever production is made in the economy, it is distributed among the people, and then it is consumed by the people, then production next year also made. It is a continuous process, and in between all this production, distribution and consumption, all is done with the help of money. Company makes production because he had to sell the products in the market and he earned the profit. A farmer make production in the agriculture sector because by selling it he can get money and he fulfill all his needs. So in today's world, or even in the earlier period, we see that any individual or any society is not capable enough to make production of all its necessary items. It has to depend on others, because a farmer will make production of the wheat, a carpenter will make production of the furniture items, a goldsmith will make production of ornaments, and people have various types of needs. So how he will going to be fulfilled by the need? He will pay the money and then he will get back his demanded items. So in society or within a country, a system is there that is called economy, and in this system what is being done? That production is made on one side, distribution is done, and then consumption is made. Then next time, if somebody purchases a mobile phone, and if the mobile phone is going to be kept in a safe box, and it will not get destroyed, or it will not stop going to work, then how will be going possible with another mobile he will going to purchase? And if nobody will purchase mobile, then how is it possible for a mobile company to make new production? So new production is also needed, and it is only possible after making consumptions of the earlier production. So production is made, distribution is done, and consumption is made, then new production is done, and all this is going on in circulatory manner, and among all these three things, the flow of money takes place. All these things done with the help of money. So money should be also available in the economy, and economy is a system. If the production is not made, then we say that there is money is not working well. यहाँ इकोनॉमी में अब मंदी का दौर आ गया है, प्रोडक्शन नहीं हो रहे हैं, तो कंजम्पशन, ग्राहक नहीं मिल रहे हैं, ग्राहक ही तो कस्टमर ही तो कंजम्पशंस करते हैं. तो ऑल दिस थिंग्स, आवर सिस्टम is known as the economy. And if the economy of a country is going to be connected with the economies of other countries at the world level, then we say that it is going to be the globalization of the economy. अगर आपके देश की अर्थव्यवस्था जो है वो किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ने जा रही है, तो फिर
कहते हैं या धीरे धीरे जुड़ रही है, तो इसी प्रक्रिया का नाम है ग्लोबलाइजेशन। तो इन दिस चैप्टर वी विल सी द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, दैट it is the integration of economy of a country with the economies of other countries through foreign trade and foreign investment by multinational corporation. So in this way we come to know that what is the meaning of globalization and what is the meaning of economy, and what happens to the economy when it is integrated with the economies of other countries at the world level. The process of integration of economy of a country with the countries of world is known as globalization. And how is it possible? It is possible by the help of foreign trade, foreign investment, and multinational companies. Multinational corporations. Multinational corporation will come in your country and will invest money and establish a new factory, and the production will be made. Then we will say that if the company comes of America, suppose Ford company of America comes in India and establish a factory in India, then we can say that our economy is going to be integrated with the company of America. So globalization is the process of integration of the economy of a country with the economies of other countries through foreign trade and foreign investment by multinational corporations. Okay, then we will try to understand in the next video lesson why there is need of globalization. Was globalization prevailing in India long before, or whether it is a new phenomena, and how is it going to be a necessary thing for globalizing the Indian economy with the economy of other countries. All these things we will discuss in the next video. Okay.